Hello and welcome to Vidhigya. So let's start with our daily analysis of Indian Express newspaper dated 13th of April. So first of all, we'll discuss which all news are important from an examination point of view. So the first news on the first page is at 6.95%, inflation up to 17-month high, slight uptick in sluggish industry output. So this particular news is about economy section, and as we're already aware, if you see our previous year examination papers, economy section, if something happens out of the blue in economy section, then we definitely take those news into account. So यहाँ पे अगर इस न्यूज की बात करते हैं, there are few terms which have been used, especially what is inflation, what is in the index of industrial production, that is IIP, and the third is MPC, that is Monetary Policy Committee. So we'll discuss about all these terms and try to get an idea about that why this there is continuous rise in terms of inflation in our country. Then second news is assets worth rupees 96,000 crore monetized in 2021-22. So if you see in the year 2021, last year we had seen that the government has announced this national monetization pipeline worth rupees 6 lakh crore. So that was for a period of 4 years. 4 साल के लिए वो था फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2025 के लिए. और बेसिकली इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही थी, राइट्स ट्रांसफर हो रहे थे. तो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, फिजिकल ईयर 22 की, तो उसमें जो कॉर्पस है दैट वाज 88,000 करोड़. तो यहाँ पे सरकार ने ऐसा बताया कि एसेट्स फॉर रुपीज 96,000 करोड़ मोनेटाइज्ड इन द ईयर 2021-2022, मींस द टारगेट व्हिच हैज बीन सेट अर्लियर, उनको वहां पर कहीं ना कहीं सरपास कर लिया गया है. Then next news which we are going to discuss on the first page, that is India US signal divergence on Russia, convergences far more. So this news is about the ongoing India US fourth 2+2 ministerial dialogue which has been going on in Washington DC in United States. So वहां पर क्या क्या बातचीत हुई उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे. एस जयशंकर जी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनका क्या कहना है with respect to this ongoing situation. And they had also addressed this particular thing in the meet a press conference which has jointly been addressed by both the ministers from India, that is foreign and defense minister, as well as from US as well. This we can skip. This is the city part. Yes, on 8th page, government and politics, US, China eroding security, dual use infra on India border. So यहाँ पे जो कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें तीनों ऑल द फोर लीडर्स वर प्रेजेंट. सो यहाँ पे चाइना की बात हुई, प्लस स्पेशली साउथ चाइना सी की हम बात करते हैं, या स्पेशली यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, प्लस जो चाइना की नेबरिंग नेशन है विच आर हार्ड हिट बाय द पॉलिसीज ऑफ चाइना विद रिस्पेक्ट टू बॉर्डर्स, which all issues which are faced by India, by countries including India. So all these things have been discussed in this particular news which we are going to discuss today. Then on the extreme left hand side, pandemic not over yet, government has not let guard down, says Mandavia. So Mansukh S. Mandavia, who is our union health and family welfare minister, he has made this statement that if we see the current situation, this XE variant has already seen that cases have been reported in India, though the number is quite less, but still it is a subvariant of Omicron variant. So if we see the current situation, the vaccination has already been going on. He has given information about how many percent of people have been inoculated with at least one dose and both the doses. And what about the vaccination process for those who are aged or children who are aged less than 12 years. So he has also mentioned about this thing. Then India can supply food grain to world if WTO permits, said by Prime Minister. सो यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली गुजरात में एक इवेंट में, वर्चुअल इवेंट में इसकी बात करी थी कि वी आर रेडी, वी ऑलरेडी हैड अ मीट कॉन्वर्सेशन विद वर्चुअल मीट विद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, wherein our honorable prime minister has made this statement that we are ready and we can supply food grains to world if WTO, that is World Trade Organization, permit us for safeguarding and providing food grains to the world. Then next is Nagaland CM, ex-CM meet Shah, discuss peace process. So यहाँ पर नागा peace process की बात की गई है, which the deal which got entered in the year 2015. उसके बाद 2019 में, ever since we had seen that Mr. R.N. Ravi, who was the interlocutor, इंटरलॉक्यूटर का मतलब होता है जो मीडिएटर होता है, तो मीडिएटर का जब वहां से नागालैंड के जो गवर्नर थे उस समय आर एन रवि, उनका जब उन्होंने पद छोड़ा, देन ही इज करेंटली सर्विंग एज तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर. तो विच ऑल प्रोसेस, विच ऑल फर्दर एक्शंस विच हैव बीन टेकन विद रेस्पेक्ट टू दिस नागा पीस प्रोसेस, उसके बारे में मिस्टर शाह और यूनियन होम मिनिस्टर एंड
the current chief minister, deputy chief minister, and ex chief minister of Nagaland had a word with. Then on the editorial page, the first editorial is the quality of privacy. Its use as a tool for market development must treat tightrope between enabling and stifling competition. So यहाँ पे Facebook की बात की गई है. Plus, as we are already aware that data is the new normal. All these big giants, tech giants, are depending upon data. And the best example, what we had seen in the US presidential elections as well, 2016, Cambridge Analytica case, we are already aware. सो यहाँ पे उसी की बात की गई है. प्लस डेटा का रेलेवेंस क्या है, स्पेशली यहाँ पर स्टार्ट एप्पल के बारे में किया गया है, बिकॉज एप्पल ने जो करंट मेजर्स लिए उसके कहीं ना कहीं जो फेसबुक है उसको काफी इम्पैक्ट हुआ है. सो उन सब के बारे में यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर बता रखा है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. देन फर्स्ट ओपिनियन, अ कांस्टेंट सिमर. यहाँ पे जो करंट सिचुएशन है, रामनवमी के सेलिब्रेशन हमने देखा था कि पूरे भारतवर्ष में यहाँ पर किया गया था. तो कुछ कुछ इंसिडेंट्स में, स्पेशली राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, काफी स्टेट्स में वहाँ पर राइट्स, कुछ ना कुछ इश्यूज देखने को मिले एट द टाइम व्हेन प्रोसेशन वाज गोइंग ऑन बाय द हिंदू कम्युनिटी. तो स्टोन पेल्टिंग हुई, काफी सारे इश्यूज हुए. तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर करंट सिचुएशन में, इंक्लूडिंग जो कर्नाटका में इश्यूज चल रहे हैं, उसको यहाँ पर ऑथर ने इस पर्टिकुलर ओपिनियन में हाईलाइट किया है. देन सेकेंड ओपिनियन, यूक्रेन एंड बियॉन्ड. सो यहाँ पर जो करंट फोर्थ इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्टरियल डायलॉग चल रहा था, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो था, बट दैट वाज वन ऑफ द इश्यूज. बिकॉज स्पेशली इंडिया यूएसए की बात करते तो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन बोथ दीज नेशंस, तो उन बहुत सारे मुद्दों पे, स्पेशली स्पेस रिसर्च में, एजुकेशन पे, स्पोर्ट्स में, उन बाकी सेक्टर्स पे भी दोनों देशों के नेताओं के बीच में यहाँ पर चर्चा हुई. देन विल सी द एक्सप्लेन पार्ट. एक्सप्लेन की अगर बात करते हैं आज के न्यूज़पेपर में, द फर्स्ट एक्सप्लेन, दैट इज मिड डे मील एंड सप्लीमेंट्स. अभी अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अपने नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से दे हैव मेड दिस कंपल्सन कि मिड डे मील, जिसको हम पीएम पोषण अब बोलते हैं, पिछले साल इसका नाम चेंज हुआ था बिकॉज प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स को इसमें इंक्लूड किया गया था. तो यहाँ पे मिड डे मील में कर्नाटका ने एग को उसमें इंक्लूड करने की यहाँ पर बात रखी है. तो कब से स्टार्ट हुआ पूरा मिड डे मील के स्कीम के बारे में, किस किस को यहाँ पर कौन कौन फंडिंग करता है, स्टेट्स कितना पेमेंट करता है, यूनियन टेरिटरीज कितना करता है, सेंटर कितना करता है, उन सब चीजों के बारे में, प्लस इंक्लूडिंग कितने स्टेट्स ऐसे हैं जो एग प्रोवाइड करते हैं, उन सब इन इन मिड डे मील स्कीम, ये सब यहाँ पे बताया गया है. Then on the world section, there are 2 to 3 news which we are going to discuss today. First is Putin says peace talks hit a dead end, war will go on. So यहाँ पे जो रशिया के प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, उन्होंने यहाँ पर हिंट किया है कि करंट सिचुएशन में, बिकॉज पीस टॉक्स यहाँ पर हो नहीं रहे और कुछ कंक्लूजन नहीं आ रहा, तो इसी तरीके से अगर सिचुएशन चलती रही तो इट्स गोइंग टू बी अ हार्ड टास्क, ह्यूमंगस टास्क इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट विच हैज बीन गोइंग ऑन. Then Ukraine probes claim poisonous substance dropped in Mariupol. So यहाँ पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की के द्वारा ये क्लेम किया गया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि करंट सिचुएशन में जो मारियोपोल जो टेरिटरी है जो यूक्रेन में बिलोंग करती है, तो रशिया के द्वारा जब इन्वेजन का पूरा प्रोसेस चालू था, स्पेशली मारियोपोल में, तो वहां पर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस भी यहाँ पर पाए गए. Then Sri Lanka announces default, says need money for essentials. So यहाँ पे we are on a daily basis getting an idea about the current situation which has been going on in Sri Lanka. और यहाँ पे current situation में भी यहाँ पर in terms of foreign exchange they are lacking short and they are not at all in a situation कि they are able to repay their external debt which is due on their part, right? So current situation में already in terms of import of अगर फ्यूल का इंपोर्ट करना, दे नीड टू पे इन डॉलर, सो दे आर लैकिंग शॉर्ट ऑफ इट. सो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया. देन नेपाल टाइटन्स imports amid narrowing forex. So not only Sri Lanka but even Nepal is also facing similar situation. So यहाँ पे नेपाल के द्वारा क्या किया गया, जो इंपोर्ट किया जाता है वहाँ के लोकल सिविलियंस के द्वारा, स्पेशली प्रोक्योरमेंट ऑफ लग्जरियस गुड्स, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं और ज्यादा उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज टैक्सेस यहाँ पर और हेविली यहाँ पर लगाए गए हैं नेपाल सरकार के द्वारा. चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इन डेप्थ एनालिसिस. सो फर्स्ट न्यूज की अगर बात करते हैं, द फर्स्ट न्यूज विच इज सेइंग एट 6.95% इन्फ्लेशन अप टू 17 मंथ हाई, स्लाइट अपटिक इन स्लगिश इंडस्ट्री आउटपुट. और यहाँ पे हम नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे. तो देर आर फ्यू टर्म्स, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में समझते हैं. सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज बेसिकली अ राइज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. किसी पर्टिकुलर कमोडिटी या कह सकते हैं आप एसेंशियल्स के अगर प्राइस यहाँ पर बढ़ते हैं, एसेंशियल्स आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल्स लाइक फूड, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, इन सब के अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहा जाता है. प्लस यहाँ पे
IIP, एक ये जार्गन दे रखा है, एक टेक्निकल टर्म दे रखी है इकोनॉमी सेक्शन की, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये बेसिकली दिस इज एन इंडेक्स जो बताती है कि ग्रोथ रेट्स इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बेसिकली एजुकेशन इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ हुआ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ हुआ, और अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज को हाईलाइट करके बताया जाता है कि कितना यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। द बेस्ट एग्जांपल इज के शेप्ड रिकवरी, अगर आपने वो देखी है तो वेर एन सम सेक्टर्स आर डूइंग ग्रेट, सम सेक्टर्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, तो उसी के बारे में दैट गिव्स अस अ गुड आइडिया दैट विच ऑल सेक्टर्स, विच ऑल इंडस्ट्रीज आर डूइंग ग्रेट एंड विच ऑल आर नॉट, वाइस वर्सा सिचुएशन। सो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं, इट इज बेसिकली एन इंडेक्स which provides the growth rates in different industry groups of the economy for a particular time, stipulated time आप कह सकते हैं, basically for a financial year or a quarter or for a month for that matter। देन यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जिक्र किया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अभी रिसेंटली 10th कंटिन्यूस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, और उसमें ये रिवील किया गया था कि जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उसको कहीं ना कहीं सेम रखा गया, करंट सिचुएशन 4% ही रखा गया। एंड दिस वाज कंटिन्यूस 20th month, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ये जो मीटिंग होती है हर 2 महीने में होती है, और दिस इज बेसिकली 6 member कमेटी विच हैज बीन हेडेड बाय आवर आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांता दास इन द करंट सिचुएशन, एंड अदर 5 other members, राइट। सो अभी भी जो मीटिंग है उसमें भी रेपो रेट को यहाँ पर 4% का 4% यहाँ पर कंटिन्यू रखा गया बाय द आरबीआई। ठीक है, सो यहाँ करंट न्यूज को अगर डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे क्या बात की गई कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 6.95%, करंट सिचुएशन में अगर मार्च की बात की जाए, दैट इज एट ए रिकॉर्ड हाई, 17 month हाई है करंट सिचुएशन में। और अगर इसके रीजंस की बात करते हैं, सबसे बड़े रीजंस है कि असेंशियल्स की प्राइस बढ़ रही है, फ्यूल की, क्रूड ऑयल की हम देख रहे हैं कि करंट सिचुएशन जो है ग्लोबल फोरम पे जो हो रहा है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि कहीं ना कहीं ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, प्लस वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, मीट एंड फिश, मतलब फिश, कहने का मतलब जो असेंशियल्स है उनके प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए ये जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो कंटिन्यूस फॉर द पास्ट 3 months रिटेल इन्फ्लेशन, क्योंकि आरबीआई क्या करता है, ऑलरेडी रिटेल इन्फ्लेशन की एक लिमिट सेट करता है, तो आरबीआई ने जो लिमिट सेट करी थी दैट वाज 6%, वो उतना इन्फ्लेशन रहना चाहिए रिटेल इन्फ्लेशन उनके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। बट इफ यू सी फॉर द पास्ट 3 months, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो आरबीआई का जो एस्टिमेट था उसको सरपास किया, मींस 6% से ज्यादा। और करंट सिचुएशन में अगर मार्च की बात करते हैं, सो दैट इज एट करंटली एट 6.95%, सो दैट हाईलाइट्स दैट इन्फ्लेशन यहाँ पर हमारे देश में यहाँ पर बढ़ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू दिस करंट सिचुएशन। प्लस यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर न्यूज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या चल रहा है, माइनिंग सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में किस तरीके का ग्रोथ है, स्पेशली इन द पास्ट 3 months, वो यहाँ पर देखने को मिला है। और उसको कंपैरिजन किया गया पिछले साल के रिकॉर्ड से, जब एट द टाइम व्हेन वी वर इन अ लॉकडाउन काइंड ऑफ अ सिचुएशन, तो उसको भी यहाँ पर ऑथर के द्वारा इस पर्टिकुलर न्यूज में हाईलाइट किया है। और यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, एज आई टोल्ड यू, बाई मंथली मीटिंग जो होती है, हर 2 महीने में मीटिंग की जाती है, जिसमें दैट इज बीन प्रेसाइडेड बाय आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांता दास। तो उन्होंने भी फॉर द पास्ट कंटिन्यूस 10 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, दैट मीन्स फॉर द कंटिन्यूस 20 months, उसको सेम यहाँ पर रखा है। बट इट हैज बीन ओपाइंड दैट from the month of June, next upcoming monetary policy committee, we might see a change in terms of the rates, in terms of repo rates, reverse repo rates, or monetary policy committee other reports, other rates as well for that matter, right। अब यहाँ पे बात आती है दैट इज एसेट्स वर्थ रुपीज 96,000 करोड़ मोनेटाइज इन द ईयर 2021-22। सो यहाँ पे व्हाई आई हाईलाइटेड दिस न्यूज, बिकॉज अ टॉपिक दैट इज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन की बात करते हैं, 6 लाख करोड़ का कॉर्पस रखा गया था, पिछले साल ही इसको लॉन्च किया गया था। और गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि बेसिकली यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं हो रही प्राइवेट हैंड्स में, बट राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर को ये राइट्स दिए जाने हैं और उसके बदले में कुछ पेमेंट लिया जाएगा, जो कि सरकार को बेनिफिट करे और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में भी कंट्रीब्यूट करेगा। और सबसे ज्यादा फोकस जो था दैट वाज ऑन रोड्स, रेलवेज एंड पावर सेक्टर, दैट कंप्राइज ऑफ नियरली 65-66% ऑफ ओवरऑल कॉर्पस, राइट। सो यहाँ पे अभी जो पूरे साल भर का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 की यहाँ पर हमने जो टारगेट 88,000 करोड़ सेट किया था, वी हैव सरपास दैट टारगेट। और करंट सिचुएशन में हमने साल भर में देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 96,000 करोड़ का यहाँ पर हमने टारगेट जो है उसको यहाँ पर अचीव किया है। और इसमें कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कोल सेक्टर ने 40,000 करोड़, रोड्स एंड हाईवेज 23,000 करोड़, मिनरल माइनिंग ने 18,700 करोड़, और पावर सेक्टर में 9,500 करोड़, यहाँ पर जो बड़े बड़े बिग कंट्रीब्यूटर्स थे इन दिस 96,000 करोड़,
coal, roads, highways, mineral, mining, and power. These sectors comprise majority of the section of this particular estimate. Right? Chali. Then we see the second news, that is India-US signal divergence on Russia, convergence is far more. So यहाँ पे there are two terms that has been mentioned, that is divergence and convergence. Divergence का मतलब होता है, it implies that basically two things moving apart. वो होता है divergence, diverge करना, right? और यहाँ पे second word is convergence far more. Convergences का मतलब होता है that two forces are moving together. मतलब दोनों forces साथ में कहीं ना कहीं चल रहे हैं. तो divergence means diverting और convergence means moving hand on hand. सो यहाँ पे सबसे बड़ी बात रशियन ऑयल और ऑलरेडी फोर्थ इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्टरियल डायलॉग विच हैज बीन गोइंग ऑन इन यूएसए, और सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर किस चीज का था कि बेसिकली करंट सिचुएशन में इंडिया इज बाइंग रशियन ऑयल. तो दैट वाज वन ऑफ द बिग इश्यूज. उसको यहाँ पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी कहीं ना कहीं हाईलाइट किया था करंट सिचुएशन में. तो करंट सिचुएशन की अगर बात करते हैं, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का स्टेटमेंट था दैट इंडिया एंड यूएस इन्वोक्ड शेयर्ड वैल्यूज करंट सिचुएशन में, एंड एंटनी ब्लिंकन हैड कॉल्ड अपॉन ऑल नेशन, सभी देशों से ये कहीं ना कहीं अर्ज किया है करंट सिचुएशन में कि जो मॉस्को में जो किलिंग्स हो रही है और मॉस्को के द्वारा जो किलिंग्स की जा रही है स्पेशली बूचा में, और यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चालू है, उसके लिए ब्रूटल एक्शंस यहाँ पर लिए जाने चाहिए. और उन्होंने अर्ज किया ऑल पार्टनर्स नॉट टू इंक्रीज देयर परचेज ऑफ रशियन एनर्जी, और उसमें कहीं ना कहीं हिंट किया इंडिया को, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो इम्पोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम रशिया इन द करंट सिचुएशन. तो ये दीज ऑल implications have been given by US Secretary of State Antony Blinken. But at the time when all these four ministers, two ministers from India and two from USA, they were doing a joint conference meeting wherein the reporters, they were asking different questions. So on being asked from Mr. S. Jaishankar about why India is purchasing or relying upon Russian energy when Russia is quite aggressive with respect to current situation. So यहाँ पे जो हमारे एस जयशंकर जी, हमारे यूनियन फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया that if you are looking at energy purchase from Russia, I'd suggest that your attention should be focused on Europe. उन्होंने कहीं ना कहीं जो फोकस है उसको यहाँ पर शिफ्ट किया यूरोप पे, और उन्होंने एक बात रखी कि yes, we do buy some energy which is necessary for our energy security, जो जरूरी है, we are dependent upon Russia for that matter, but our total purchase for the month would be less than what Europe does in an afternoon. मतलब हम जितना एक महीने में यहाँ पर खरीदते हैं रशियन एनर्जी, उससे ज्यादा तो एक दिन में, एक आफ्टरनून में यहाँ पर यूरोप के द्वारा यहाँ पर परचेज किया जाता है. तो ये जो सवाल यहाँ पर बार बार पूछे जा रहे थे कि वाई इंडिया इज रिलाइंग अपॉन, और उसको यहाँ पर उन्होंने पहले भी इसका जवाब दिया, और यहाँ सेकंड टाइम इन द रीसेंट इंस्टांस वेयरइन वी हैड सीन दैट एस जयशंकर हैज मेड दिस स्टेटमेंट टू द प्रेस रिपोर्टर्स. और यहाँ पे जब पूछा गया कि प्रेशर्स यहाँ पर बिल्ड किए जा रहे हैं वेस्टर्न नेशंस के, स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू रशियन ऑयल एंड ऑल, तो यहाँ पे एस जयशंकर जी ने यही बात बोली कि जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, और प्लस इफ वी गेट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस फ्रॉम वन कंट्री, और हमारे देश में अगर उस चीज की डिमांड है, देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद दैट पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ परचेजिंग दैट पर्टिकुलर कमोडिटी और गुड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर country. And apart from this, Antony Blinken, US Secretary of State, has also talked about that countries, those who are purchasing S-400 or earlier had made contracts, they should stop buying from these Russian companies because of the current situation in which Russia has already and even US has already invoked CAATSA, that is countering America's adversaries through sanctions act. So यहाँ पे काफी सारी चीजें यहाँ पर बात की गई. Plus all the four ministers had unequivocally यहाँ पर they had condemned the civilian deaths which has been going on in Ukraine. Then US China eroding security dual use infra on India border. सो यहाँ पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कहीं ना कहीं हिंट किया करंट सिचुएशन में. अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना इज क्वाइट वोकल, स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू द नेबरिंग नेशंस की अगर हम बात करते हैं तो दे आर हैविंग डिस्प्यूट्स विद अ लॉट ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, एंड they wanted to have a big stake in Indo-Pacific region and even in South China Sea, right? So उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ जो डिफेंस है लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी जानकारी दी. और on being asked about the current situation between India and US by a reporter, तो पूछा गया है कि missed opportunity, especially India and US के bilateral ties are very good, but still if we see the current situation, a lot needs to be done. तो at that point in time यहाँ पे यही बताया गया कि there are a lot of missed opportunities as said by Lloyd Austin, और उनके द्वारा यही कहा गया कि हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी अगर देखा जाए तो इंडिया जो यूएस के रिलेशन है, दैट आर वेरी गुड,
पहले और अच्छे हो सकते थे, बट हाँ, आई डोंट नो अबाउट द पास्ट, बट करंट सिचुएशन में देखा जाए तो बोथ दीज इकोनॉमीज, बोथ दीज वर्ल्ड इकोनॉमीज आर गोइंग हैंड इन हैंड, एंड दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द वर्ल्ड forum as well. And there are few agreements which have also been signed. Both these countries signed bilateral space situational awareness arrangement between both these nations that is going to support them, especially with respect to cooperation in terms of space sector. उसकी यहाँ पर बात की गई, प्लस साउथ चाइना सी में जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसकी यहाँ पर बात की गई. एंड आवर ऑनरेबल यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज आल्सो cited that India hopes to have a free, open and inclusive rule-based order, common interest that is shared by the nations. तो ये भी यहाँ पर बताया गया, because especially hinting China with respect to current situation. Then the fourth news, that is pandemic not over yet. Government has not let guard down, says Mandavia. So this statement has been made our Union Health and Family Welfare Minister, Mr. Mansukh S. Mandavia, and he has talked about that it has been seen that a lot of people have stopped following this COVID appropriate behavior, and people should start and always use in this particular situation mask and other COVID appropriate behavior. And a new variant XE, which has already seen cases in India. So यहाँ पर उसको देखते हुए people need to be more cautious with respect to current situation. और यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि 97% of our eligible population has received at least single dose, and 85% of our eligible population has received both the doses, vaccine doses. And he also talked about precautionary dose जो भी यहाँ पर start कर दी गई है, that is booster dose जिसको हम बोलते हैं third dose. और on being asked about that, what about the vaccination process programs of those people who are less than 12 years of age, तो उन्होंने यही बताया कि experts are already doing their research, and there are very few countries who have gone for administering jabs to children in this particular age group of less than 12 years, right? तो ये उनके द्वारा यहाँ पर जानकारी दी गई. Then India can supply a food grain to world if WTO permits, said by Honorable Prime Minister. So Indian Prime Minister, he was attending a meeting, a conference virtually in Gujarat, and wherein he had talked about the current situation, wherein अभी भी उनकी जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनसे बातचीत हुई थी, और वहां पे भी उन्होंने यही बात रखी थी करंट सिचुएशन में इंडिया इज केपेबल इनफ टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू द वर्ल्ड इफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन परमिट्स देम. एंड वी आर नॉट सेइंग इट फॉर द sake of saying it, but earlier also, ever since we have seen this pandemic situation in the country, we have provided through Pradhan Mantri Gramin Anna Yojana, nearly 80 crore people have got received at least 5 kg of wheat and 1 kg of pulses through this particular Yojana. And recently we have extended this Yojana for another 6 months. So we are capable enough, if we got permission, then we can supply food grains to the world in case if any country needs that. Then there is small news about Nagaland. That is Nagaland CM, ex-CM meets Shah, discuss peace process. So Nagaland peace process की बात करते हैं. Interlocutor जो थे पहले RN Ravi. Now he is currently the governor of Tamil Nadu. So current situation में Naga peace process 2019 से that was at the back end. So यहाँ पे जो ex chief minister है Nagaland के, current chief minister, deputy chief minister, all these ministers have met our honorable Union Home Affairs Minister Mr. Amit Shah, कि ये जो पर्टिकुलर इशू है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड NSC and IN, जो पर्टिकुलर फैक्शन है, सेपरेटिस्ट फैक्शन है यहाँ पर नागालैंड में, उनके बीच में यहाँ पर चर्चा हो. प्लस यहाँ पे नेगोशिएशन, बिकॉज RN Ravi is currently serving as the governor of Tamil Nadu. So the current interlocutor, और जो the person who is जो यहाँ पर मध्यस्थता करा रहा है दोनों factions के बीच में, that is government and NSC and IN, is basically director Akshay Mishra, who was the former IB special director. Then the quality of privacy. So that this was the first editorial. It's used as a tool for market development, must read tightrope between enabling and stifling competition. तो यहाँ पर Facebook के द्वारा, plus as I told you, data is a new normal. If you see the current situation, तो यहाँ पे how much contribution data is making and how these countries, big tech giants are sustaining. Especially the best example is we had seen recently that Facebook के द्वारा उसका जो name है वो change किया गया, जो parent company that is now Meta. So अभी भी current situation में the steps which have been taken by Apple with respect to privacy, that has got harder to Facebook, because they had to their overall revenue has been shrink down by nearly $10 billion. So उसी की यहाँ पर बात की गई. प्लस current situation में जो new IT rules यहाँ पर इंडिया में लाए गए, प्लस
व्हाट्सएप के द्वारा जो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट दैट वाज आल्सो इन द न्यूज, राइट, बिकॉज इट वाज अ कंपल्जन दैट कि आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, बट देन through CCI, that is the Competition Commission of India, invoked into this matter, and they had said that take it or leave it. It's not a compulsion because that is not the same thing in other Western economies. So उसी के बारे में यहाँ पर how privacy is important, how these tech companies are earning through these things. So उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया. Then the first opinion, that is a constant simmer. So यहाँ पे on the occasion of Ram Navami, we have seen incidents happening in Rajasthan, Gujarat, Jharkhand, West Bengal, a lot of even in Madhya Pradesh as well. In a lot of states and union territories, we had seen issues going on, and wherein procession was going on, and we have seen incidents like stone pelting and all. So उनको यहाँ पर condemned किया गया और author की तरह यही कहा गया कि whichever is the respective government, either it is BJP, Congress or any other party, uh, that respective state government should take due cognizance, और उसका यहाँ पर those who are accused of the same strict action has to be taken. प्लस यहाँ पे कर्नाटका में बिकॉज रिसेंटली हिजाब कंट्रोवर्सी देखा जाए तो, प्लस यहाँ पे एग जो मिड डे मील स्कीम में इंक्लूड किया जा रहा है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो फॉर्मर सीएम जो थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं येदुरप्पा, उन्होंने भी कहीं ना करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बसवराज बोम्मई, उनको हिंट किया है कि आप सरकार भी चलाइए, केवल इन्हीं मुद्दों पे कहीं ना कहीं बातचीत के अलावा दूसरा काम भी यहाँ पर डेवलपमेंट का होना चाहिए. Then second opinion, Ukraine and beyond. So this was about the fourth India-US 2+2 ministerial dialogue, और यहाँ पे यही बात रखी गई कि इंडिया और यूएस के जो इश्यूज है that are not restricted to, और जो यहाँ पे चर्चा की that was not restricted to Russia-Ukraine conflict, but even other matters for that matter, उनको भी यहाँ पर डिस्कशन किया, especially bilateral agreements between both the countries had also been signed in this particular meet, and wherein our honorable Prime Minister had attended that particular meeting virtually. Then the first explained midday meal and supplements. So midday meal, this was in limelight because of Karnataka, जहाँ पे हमने देखा था कि कर्नाटका has now become the 13th state जिसमें यहाँ पर एग जो है उसको मिड डे मील स्कीम में यहाँ पर इंक्लूड किया गया फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक सेशन. और मिड डे मील की बात करते हैं तो उसका that was started in the year 1995, then in the year 2015, 2021 its name has got changed to PM पोषण, नाम चेंज किया गया था. और सबसे पहले तमिलनाडु देन केरला वहां पे स्टार्ट किया गया था बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु के कामराज. और इनिशियली फर्स्ट टू एट क्लास के लिए था, देन प्री प्राइमरी एजुकेशन स्टूडेंट्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया, उनको भी बेनिफिट किया गया थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम. एंड बट यहाँ पे मेन्यू की अगर बात करते हैं तो उसमें फिक्स कैलोरीज और प्रोटीन्स रखे गए हैं कि हाँ मतलब फॉर एग्जांपल फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स this much amount of calories has to be there, this much amount of protein has to be there, and the same thing goes with even the menu as well, even in terms of calories as well. And if you see the percentage ki kitna contribution states ke, kya this is this a 100% centrally sponsored scheme? No, but yes, why I'm saying so, in union territories 100% of the contribution has been made by the central government. In majority of the states 60-40 ratio is there between the center and the state, and few states 90-10 ratio is there, especially if you see the northeastern states or Jammu Kashmir, Himachal Pradesh or Uttarakhand for that matter. Then on the world section, the first news, that is Putin says peace talks hit a dead end, war will go on. So after a long time, we had seen statement made by the Russian President, Mr. Putin, wherein he talked about the current situation, and as peace process has already been initiated between both these nations. But कुछ यहाँ पे if you see the current situation, it's going to be a big task that either we'll be able to solve this particular issue with respect to conversation, because अभी दोनों देशों के बीच में काफी बार बातचीत हुई but कुछ solution नहीं आया because of the demands which has been put in by यूक्रेन, दैट हैज बीन सेड बाय रशियन प्रेसिडेंट. सो उसकी यहाँ पर बात की गई. प्लस उन्होंने जो बूचा किलिंग जिसको सभी जगह इवन इन द यूएन जनरल असेंबली एंड यूएनएससी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उसको कंडेम किया गया, उसको भी यहाँ पर उन्होंने बताया कि दिस इज बेसिकली फेक थिंग विच हैज बीन surfacing online or on different social media platforms and TV news channels, that has been said by Russian president. Then Ukraine probes claim poisonous substance dropped in Mariupol. So यहाँ पे यूक्रेन प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि रशियन फोर्सेस के द्वारा ये जो अटैक किया जा रहा है उस सिचुएशन में हम ये देख सकते हैं कि especially Mariupol में it has been seen that hazardous substance, poisonous substance has also been found, and already this in this if you see this particular war kind of situation, Russia is quite vocal. So उसको देखते हुए यहाँ पर ये जो current situation में जो poison substance का मिलना, that is going to be hard hit with respect to this ongoing dispute. Then Lanka announces
Debt default says need money for essentials. So श्रीलंकन इकोनॉमिक इमरजेंसी के बारे में वी आर डिस्कसिंग ऑन अ डेली बेसिस. और करंट सिचुएशन में भी अगर देखा जाए तो श्रीलंका ने ऑलरेडी यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि जो फॉरेन करेंसी उसका पेमेंट है दे आर अनएबल एंड दे आर नॉट केपेबल इनफ ऑफ पेइंग दैट. तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और उन्होंने यहाँ पर करंट जो गवर्नमेंट है दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट वी आर ऑलरेडी टेकिंग and other countries like India and the countries are also helping us. So if we go and we had also formed a separate committee for that matter in order to resolve this particular issue. So यहाँ पे in coming times we'll see more clarity that how Sri Lanka takes away with this particular situation. Then the last news that is Nepal tightens import amid narrowing forex. So Nepal is also falling short of these foreign exchange reserves. So that's why यहाँ पे नेपाल के द्वारा ये जो imports हैं of luxury items उनके ऊपर यहाँ पे जो taxes है उनको यहाँ पर बढ़ा दिया गया so that यहाँ पे foreign currency यहाँ पर या डॉलर जो है वहाँ पर का पेमेंट यहाँ पर कम हो सके स्पेशली नेपाल में. Now we'll move to the quiz section. So the first question is, who will succeed Harshvardhan Shringla and become India's new foreign secretary? Options are Manpreet Vohra, KG Srinivasa, Gopal Bagle, and option D is Vinay Mohan Kwatra. So the correct answer of this question is option D, that is Vinay Mohan Kwatra, जिनको यहाँ पर नया foreign secretary बनाया गया and he'll be replacing Harshvardhan Shringla. Which country will get weaponized drones for the first time ever? Options are Israel, France, UK, and Germany. So, correct answer of this question is option D, that is Germany. Germany will get weaponized drones for the first time after years of debate. The German armed forces have until now only been allowed to deploy unarmed drones for reconnaissance purposes. Then question number third, what is the name of the portal that has been launched by the Union Culture Ministry to watch temple rituals live? Options are Temple 360 degrees, Temple 90, and Temple 180. So the correct answer of this question is option A, that is Temple 360 is the portal which has been digital platform that will enable devotees to visit or do online darshan of 12 Jyotirling and Char Dham from any location in the country. Then question number four, which among the following is the new highest currency bill that Zimbabwe is planning to introduce? Options are $100, $1,000, $200, or $10,000. Correct answer of this question is option A, that is $100. Question number fifth, as per the update of World Health Organization's air quality database, what percentage of the world breathes unhealthy air? Options are 25%, 49%, 75%, and 99%. So the correct answer of this question is 99%. So with this, we end today's analysis of Indian Express newspaper dated 13th of April 2022. That's all from my side. Thanks for watching.